Bismillahirrahmanirrahim. We are performing ultrasound of a pelvis. This is a uterus. This all is uterus and this is a unibladder. जब भी आप अल्ट्रासाउंड करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए देखते हैं तो आपको यूट्रस में चीज़ें जो देखनी होती हैं, एंडोमेट्रियम देखना होता है, मायोमेट्रियम देखनी होती है, सर्वैक्स देखना होता है और उसकी मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का साइज़ देखना होता है और साथ में आपको एंडोमेट्रियम के अंदर देखना होता है कि उसके अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है। जब हम इसका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो अब ये देखें कि ये जो है ये एक आपको कुछ एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ पे नज़र भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो है मायोमेट्रियम है, फंडस है या सर्वैक्स है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको हम ये दिखाते हैं, ये देखें तो ये दिस इज़ ए ह्यूज मैस इन दी मायोमेट्रियम एंड there are small multiple masses as well, and this one is endometrium. So this is endometrium, these are small masses, this is also a mass in the fundus area and this is large mass. So it pressed the endometrial cavity. Whenever there is a pressing of endometrial cavity, you see this is the endometrial line and this one is irregular line from here to here. It should be here to here as a straight, but it is pressed by the mass. Mass is starting from interior to posterior, and there are two also mass. This is a pedunculated fibroid. This is a large mass. This is AB also a fibroid, but we have to differentiate and ask the patient, is it the pregnancy can occur or not. So this is a case of infertility, and in this case we cannot say that either it will pregnant or not because the endometrial cavity is pressed. So we have to remove, try it to remove by laparoscopically so that the scar mark not so large, and these are small that can reoccur as well. Also they can reoccur. So the surgery is not successful, but embolization is better way. When you embolize these masses, the blood supply is cut down and they decrease in size slowly. So the best way is to embolize these masses, not the embolization is now cheap in Pakistan, is easily done in PKLI as well as other centers, private centers also doing this embolization. So whenever the case is pregnancy, the main मकसद हमारा जो है कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसके लिए तो फिर इसको एम्बोलाइज करवाएं तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप एम्बोलाइज नहीं करवाएंगे तो स्कार मार्क बनते हैं, चाहे वो लेप्रोस्कोपिकली रिमूव करें चाहे वो मेन ओपन सर्जरी से करें तो उससे स्कार मार्क बनेंगे। तो ये जो केस है इसमें आपको मैंने ये बताना था कि इसकी बेस्ट वे जो है वो एम्बोलाइजेशन है और उससे इनफर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है और फर्टिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ आज का केस। ओके, थैंक यू वेरी मच।